Assalamu alaikum ji. Welcome back to an episode of Kahe, Kazi. My guest today was Yahya Haroon. Yahya is the owner and proprietor of Thrive Streetwear, which is what I'm wearing right now. We get to speaking about the fashion industry, the clothing industry in Pakistan, how he hopes to exert his effect on said industry, about the PR, about what ails this industry, about his love for Urdu typography and where that comes from, about how he started at a young age and how he is still so very young and just learning about the ropes of the industry and about what the future holds for Thrive Streetwear. सही है और कुछ डालना है? बस ठीक है. 3, 2, 1. Yahya Haroon. How you doing, man? Great. Yeah. So, how are you doing? Fantastic. Better now that you got me all this wonderful stuff. You got me these you look shorts. sick, by the way. Huh? You look sick. I'm not sick. But you look sick, like dope. Acha dope. Oh, okay. The kids. मैं थोड़ा बड़ा हूँ ना. Thank you, man. Thank you. Wonderful shirt. I have not stopped raving about the shirt. I have. You sent it to me. I think 1.5 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले. Yeah. Wonderful. Fits well. Beautiful. But then the shorts also. Yeah. The shorts are recent, huh? Recent, yes. Okay. So tell me. Let's just start there then. Thrive is your business. Yes. You're 22 years old. 21, yes. 20 years old. And you started when you were 18 going on to 19. Yes, exactly. Why this? इसके लिए हमें बहुत पीछे जाना जाओ, पड़ेगा. पीछे तो basically I've always wanted to do something creative. तो ये चीज़ें रही हैं. तो basically I am a bit of an introvert. Okay. ठीक है. Like शुरू से. So for me to express my own thoughts and feelings, I've always suffered in it. Like किसी को like vocally बताना कि like मैं कैसा feel कर रहा हूँ, like पहले की बात कर रहा हूँ, अब I guess बेहतर होगा. तो clothing एक ऐसी चीज़ थी, we all want to dress good. Sure. Yeah. तो like I've always had a thing for clothes, always. Sports से शुरू हुआ था, cleats से, आपके football से, Nike, Adidas वगैरह सबसे वहाँ से शुरू हुआ. क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत इन था. तो वहाँ से फिर ये सारी ब्रांडिंग की तरफ और क्लोथ्स और सारा देयर इज अ होल वर्ल्ड टू इट. Sure, of course. तो वहाँ से फिर ऐसा ऐसा ये जो एज होती है 18-19, यू एक्चुअली काइंड ऑफ एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ. Sure. ठीक है, यू ग्रोइंग, एक्सपोजर मिल रहा होता है आपको. तो आई वांटेड टू डू समथिंग जिसके अंदर लाइक थ्रू विच आई कुड लाइक सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन माई ओन थॉट्स and emotions. Express yourself? Yes, exactly. Okay. तो clothing, since जैसे मैंने बताया कि I've always been into this कि like अच्छे कपड़े just हम सबको ऐसे शौक होता है. तो I chose clothing. So is it fair to say fashion then? That's what you're saying. You wanted to express yourself through fashion? Yes, kind of. Okay. And fashion भी kind of like बाद में आया. okay. तो लाइक पहले कोई मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था. लाइक जब मैंने स्टार्टेड आउट दिस क्लोथिंग ब्रांड, तो ब्रांड भी मैं अगर कहूँ इसको कि जी मुझे शौक है कि मैंने कोई बिजनेस करना है या कोई ब्रांड डेवलप करना है, इस तरह कोई चीज़, पैसे कमाने बेसिकली, वो कोई भी चीज़ नहीं थी. आज भी नहीं है शायद इतनी कि पैसे हो या फेम हो या तो फिर कोई पॉपुलर हो जाए कपड़े, इस तरह कोई भी चीज़ नहीं थी. तो फैशन भी बाद में जब मैंने शुरू किया काम, रिस्पॉन्स अच्छा आया, रिकग्निशन मिलना शुरू हुई थोड़ी, तो फिर उसके बाद आई चोज फैशन एज अ मीडियम लाइक सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेस माई सेल्फ. तो फिर उसके बाद सब तक की स्टोरी है, एंड इट्स ऑलमोस्ट गोना बी लाइक 3 years अब जुलाई में जाके. So fashion, you could have chosen. So fashion was just the medium that you chose. You could have chosen anything. You think? Anything, yes. You just wanted to express yourself. Yeah. What else did you try besides fashion? Sports. What sports? Because मैं वैसे इतना एक्सप्रेसिव नहीं था, लेकिन स्पोर्ट्स में लाइक फुटबॉल में फुटसॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, तो लाइक आई हैव ऑलवेज बीन इनटू स्पोर्ट्स. मैंने शायद पहले मेंशन किया. तो उसके अंदर शायद सब पे फील आता है, मेरे पे था कि आई रियली वांटेड टू बी अ फुटबॉलर और लाइक एन एथलीट. You wanted to be an athlete? Yeah. Were you good? Yes, I think I was good. लेकिन maybe I wasn't too good eventually. तो ऊपर से sports in our country और जो भी like उसके साथ सारे stereotypes वगैरह attached होते हैं, तो it was really hard for me to make something out of it. कहीं जा नहीं सकोगे and all those things. Exactly. पैसे कमा नहीं सकोगे and all those things. वो भी kind of. लेकिन पैसों से ज़्यादा इतनी opportunities भी नहीं थी तब, मैं समझता हूँ. Opportunities तो नहीं थी bro. नहीं थी स्पोर्ट्स में. क्या है नहीं. हाँ, ये भी है kind of. सही बात है. Opportunities नहीं है. What's it called? Interesting. What position do you play in football?
So I started out as a striker basically. Okay, are you So- aggressive? Yes, I am aggressive. I'm quite aggressive when I'm in sports. You know, when I'm playing sports, like I'm really aggressive. I'm like, भाई मारो इसको भी करो निकाल लो उसका कोई मसले वाली बात नहीं. Yeah. तो जैसे like मैंने शुरू किया like मेरे लिए एक वो एक्सप्रेशन के लिए एक मीडियम ही है वो भी. Like it's a way for me to express myself. जैसे मैं कपड़ों के थ्रू करता हूँ उसी तरह स्पोर्ट्स में. तो लेकिन इवेंचुअली पता नहीं आई started to play as a goalkeeper like 3 to 4 years back. Like बड़ा jump है like from a striker to a goalkeeper since Well, I had a good You're built for it, exactly. Yeah, kind of, yes. Yeah. So practically like I turned out a really good goalkeeper. I'm still playing occasionally. Okay. So yeah, that's it. Well, I think देखो, the thing is, I think what I'm trying to do is pick out underlying themes. Like there's obviously there must be a tether to your expression. No? Matlab, what is it that you want to express? And I'm trying to figure that out from your sports, which is another medium of expression, to your clothes. Exactly. So there is a sense of aggression in these clothes. Obviously they're quite bold if you see. Yeah. Like quotes वगैरह जो भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनके ऊपर जो भी the typography, you know, like mostly Urdu typography and stuff like that. तो like throw back to Urdu Digest वाली thing. तो या आई मीन काफ़ी ब्लंट होते हैं लाइक जो भी मैं बोलना चाहता हूँ. डिज़ाइन लैंग्वेज भी काफ़ी प्लेन भी है लेकिन इट्स क्वाइट audacious. That's interesting, right? So and the thing is, there's just the two of us and Wahab sitting here, and so you can speak like this. Are you good at public speaking? Not much. But I've improved myself a lot since starting out my own label. Interesting. You know, very interesting. Because I got to meet a lot of new people. Okay. काफ़ी नए लोगों से इंटरेक्शन हुआ है उसके बाद से जो कि मैं शायद पहले वाला याया सोच भी नहीं सकता था ये. You know. Bro, you're only 21 though. You need to understand this. You're not even done growing. You know. Yeah. आप जो है okay. So physiologically speaking, 25 साल की उम्र तक तो आपका brain भी fully form नहीं होता है. Do you know that? Right. Yeah. अभी आपके पास जो अलग खैर करेगा सही है. But you're doing wonderful work. Yeah. I do want to let's just go on a tangent for a minute and explain that Urdu Digest वाली thing. हाँ यार right. आपके Urdu Digest आपके दादा निकालते थे. Yes, मेरे दादा निकालते थे. Please tell me about that. तो बेसिकली मेरे दादा का एक डाइजेस्ट था. उर्दू डाइजेस्ट था. सो दादाबू स्टार्टेड इट आउट विद हिज ब्रदर. ओके. तो वो लाइक हमारी फैमिली में रहा है तो अभी भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं सारे. तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट रहा है लाइक दादाबू और यू नो लाइक उर्दू लैंग्वेज के साथ बड़ा एक डीप कनेक्शन है फैमिली का लाइक फादर की साइड से. ओके. तो वो चीज़ कहीं ना कहीं चलती आई है लाइक आई मीन जो हमारी जनरेशन है लाइक कजिन्स की हमारी जो थर्ड जनरेशन चल रही है अभी माशाल्लाह. तो वो शायद इतना नहीं अटैच कर पाए अपने आप को लाइक विद द डाइजेस्ट एंड द लैंग्वेज अनफॉर्चुनेटली. ओके विद द लैंग्वेज ईदर. ओके. दादा बाबा हयात है? नहीं अब नहीं है. अच्छा अल्लाह जाने नसीब करे उनको. So 2 questions. Were you guys not able to attach yourself because print as a medium is diminishing? Because there was something about so I'm 10 years older than you. There was something about reading a book, buying a book, which was sexy. It was romanticized till I was 19, You're right. 20, 22 even. And then it started getting phased out. All of a sudden, जैसे Netflix ने शायद TV के साथ किया है, Kindle and iBooks did the same thing with books where it's just so much easier, dude. Yes. It's so much easier just to read books on your phone. Exactly. All of us have phones. We can just read our books there, you know? You're right. So was that? I guess it was probably one of many factors, I guess. एक तो हो सकता है ये. दूसरा ये कि I guess शायद एक उस फेज से चल रहे थे कि यू नो लाइक इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वगैरह सारे और ऑब्वियसली उसके अंदर वी ऑल नो कि इम्पैक्ट जो है उर्दू का उतना नहीं होता जितना आपके इंग्लिश को लैंग्वेज को अनफॉर्चुनेटली इंपॉर्टेंस दी जाती है. आई गेस वो फैक्टर कहीं ना कहीं ज़रूर प्ले किया ही है. Absolutely. तो लाइक उसमें लाइक हमारा कल्चर पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा है ऑब्वियसली और स्टफ लाइक दैट. शायद इसमें कहीं वो फ़र्क आ गया काफ़ी. लेकिन लाइक कोशिश ज़रूर की है. लाइक अभी भी अगर मैं अपनी बात करूँ तो लाइक मैं रिलेटिवली अगर अपनी कोई कजन्स वगैरह की बात करूँ तो लाइक मैं काफ़ी बेहतर हूँ अभी लाइक फिर भी कंपैरेटिवली उर्दू में है थोड़ा बहुत. लेकिन लाइक ओवरऑल एक बहुत इफेक्ट पड़ा है इस चीज़ से. Okay. By better you mean you can use Urdu better. Yes, I can use Urdu better. Dude. You know what? It's like that with me and Sindhi. So when I was young, I could speak
proper साफ सुथरी सिंधी, right? But then as I got older, and वही वाली बात है, post colonial एक हमारा क्या कहना चाहिए, culture है background fugue है, है, जो भी है, everything. You're always taught कि if there is one source of power linguistically, it's English. Obviously, yes. You can, if you speak 100%. English, people will take you seriously. Exactly. You are meant to speak. If you are trying to make a point, it needs to be in this language. Yes, It can't be in any other language for some reason. And people respond to it, Yeah. by the way. Yeah. अब I think आपकी generation जो है, या आपसे भी जो छोटे हैं, they are decolonizing. उससे पहले भी हो रही थी, लेकिन individually हो रही थी. अब mass decolonization हो रही है, and people your age or younger are going completely opposite, completely against that, and they actually make fun of Yeah. English speakers. ये burger है, ये वो सब कुछ जो Kind है. of, yes. ये होता मेरे ज़माने में भी था, लेकिन मेरे ज़माने में होता था, हाँ ठीक है, there was a bifurcation, आप मेले हो या burger हो, Yeah. right? Where a burger was not necessarily a negative thing. Now it's turning out to, like, it's being made to look like it's a negative thing. Yes, exactly. ना बोलो इंग्लिश में, उर्दू में बात करो, अपनी ज़बान में बात करो. Change आ रहा है. Yeah, आ रहा है, yeah. yes. And the thing is, dude, I don't know which way is better. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक बेहतर है दूसरा बदतर है. But there's something to be said about being connected with your language, and your language connects you to your roots. Exactly. To your culture and stuff. Yeah. One of my closest friends in my life is Chris D. Peter Antonio. He's Italian. Couldn't speak the language though. And because of that reason, because he's Canadian, no? He was a second generation Canadian, but uski heritage Italian thi. So his dad could, his mom could, he couldn't, right? Because he couldn't speak Italian, he would sometimes feel that there were parts of his culture that he just didn't have access to. They become dormant. Exactly. And I feel that way with a lot of our cultures. Because language basically connects us to our roots, 100%. to our culture, our heritage, eventually. Yeah. So, but I think what you're doing is interesting in that facet as well, क्योंकि आपके जो कपड़े हैं, they are almost always, I feel necessarily, there is some kind of Urdu tether to definitely, them. definitely. What goes into design? Like, for instance, this shirt, right? So this is an oversized shirt. I'm wearing a medium. I usually wear an extra large, right? Which is one. Okay, I need to say this. Okay. They're wonderfully made shirts, right? I was super happy about this. कि ठीक है. So you're putting yourself out there, but lots of people put themselves out there. Lots of people don't have good clothes though, right? In fact, unfortunately, I could maybe count on one hand the amount of people जिनका correspond करता है, marketing उनकी quality से correspond करती है. Rasta being on top. Obviously, right? yes, we'll come to that. अच्छा, absolutely. Yeah. Rasta just doing phenomenal work. Amazing. Outfitters recently. They've improved. They've improved massively. Dude, massively, right? 2-3 साल में. And this is the problem. See, now I just, like, off the top of my head, शायद होंगे, right? No one needs to take offense at this. शायद होंगे. But मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ रहे फिर? अगर हैं तो. नहीं है. हाँ, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? That's the problem. So when you sent me over the shirt, immediately you were like, आप कौन सा size पहनते हैं? मैं आपको extra large. You're like, मैं आपको medium भेज रहा हूँ. I'm like, yeah, this kid clearly has no idea what's going on, right? And I did take that dismissive approach because I'm so jaded by other clothing brands, quote unquote. So when I received the shirt, the quality absolutely struck me. I was like, this is really good quality. Alhamdulillah. And again, dude, like, I don't care. आपको पता है मैं नहीं पहनता. You've not paid me. No one pays me. This is not a thing, right? But, and also the fit. So this is true oversized. Yeah. The silhouette's amazing. I mean, it falls beautifully on you. Oh, thank you. Right? So okay. So now that we know that quality is something, at least for this shirt and then for these shorts, ये दो चीजें मैंने sample की है, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ. Obviously. You've not compromised on. So then is it fair to say that quality is something you're like, okay, जो भी बनेगा अच्छा बनेगा? 100%. Okay. Because when I started out, अभी recent ही बात करूँ, क्योंकि when I started out मुझे नहीं पता था brand ने कहाँ जाना है. तो like I started out with just 3 t-shirts, plain t-shirts, slim fitted regular t-shirts, जो हम पहनते हैं. बीच में like कोई भी अपनी तरफ से कोट लिखा मैंने,
लाइक कोई भी लाइन लिखी, प्रिंट करवाई उसको, स्क्रीन प्रिंट, और जी 3 टी-शर्ट्स मैंने निकाल दी, जहाँ से ब्रांड बेसिकली शुरू हुआ. व्हेन आई न्यू नथिंग अबाउट डिज़ाइन, फैशन, नथिंग. अब इस लाइक ये 3 टी-शर्ट्स हैं, इनकी थोड़ा कट थोड़ा सा डिफरेंट था नीचे से. मैंने कहा यार ठीक है, एक ब्लैक वाइट ये बस निकाल दो, शुरू करते हैं कुछ ना. तो वहाँ से लेके अब जो जहाँ पे ब्रांड खड़ा हुआ है, लाइक इनकी डिज़ाइन लैंग्वेज में लाइक ज़मीन आसमान का फ़र्क है. ओके. लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट है. ये ब्रांड जब शुरू हुआ था बिल्कुल शायद इसकी आइडेंटिटी बिल्कुल डिफरेंट थी जो अब है. इंटरेस्टिंग. तो इसी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो थ्राइव बेसिकली इज़ नेवर लाइक इट वाज नेवर सपोज टू बी अ फास्ट फैशन ब्रांड. जैसे हमने क्वालिटी की बात की, सो वी बेसिकली मेक लिमिटेड प्रोडक्ट्स, like limited quantity, extremely limited quantity. So like most of our stuff sells out and we don't even restock our stuff. Okay, so you know who else does stuff like this? Rasta. Fatwa does as well. Fatwa does. So see, Fatwa does that, but so far I feel like I don't know, maybe आपकी quality थोड़ी better है उनसे, थोड़ी सी, you know. No. Listen, we're all friends. I have nothing but love for these people. But मुझे ये issue इसलिए होता है, देखो. मैंने किसी और से भी सुना है ये बात. यार देखो, जो भी है वो है. I love those guys. I love them to death. Same. Actually. Because Abdullah Qasumbi and those boys, come on now. Come on. But एक और चीज़ है. So why it bothers me is because so now we have Rasta, we have Fatwa, and then we have outfitters जो for some reason is in that category, but I don't know if they should be, you know. Yeah. Because they're not they are kind of fast fashion. They are a fast fashion. पर अब quality है तो है, मैं क्या करूँ. There are so many clothing apparel brands जिनसे इरफान भाई की merch ज़्यादा अच्छी होती है. So Scene Screw clothing, quality wise is अच्छा. So Scene Screw clothing is I think as good as this stuff. But that's ridiculous because there's other brands who should be able to compete with you because they're clothing brands. Yeah. Why are they not able to? Well, maybe I'm a stickler. Who knows? Mass production की जैसे बात की है, my intention was never to like satisfy everyone. Okay. तो कभी मैसेज को भी डील करने की भी नहीं, क्योंकि you're wearing the stuff right now, you're wearing the shorts and the t-shirt. जो इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज है, ये हो सकता है मुझे और आपको इंटरेस्टिंग लगी हो. हम बाहर किसी बंदे से पूछेंगे यार तुमने क्या पहना हुआ है, क्या है ये क्या है, ले जा दूर जा यार, तो क्या कर. Why is this color? No, sure, of course. Exactly. कलर भी शायद बाद में, द प्रिंट्स बेसिकली जो मेरे होते हैं ये फिर थोड़ा मॉडरेट्स है, कुछ बड़े ब्लंड से होते हैं, उस पर कुछ लिखा हुआ है टिपोग्राफी वगैरह. तो लाइक पीपल इट्स रियली हार्ड फॉर समवन, मतलब people don't take you seriously. Okay, fair. ठीक है, mostly. Yeah. I think ये एक इशू बड़ा फेस करता हूँ मैं, क्योंकि हम शायद काफ़ी पीछे हैं लाइक इन टर्म्स ऑफ टॉलरेंस भी, और वैसे भी लाइक डिज़ाइन सेंस के उस पर भी कि वी सो यूज्ड टू वेयरिंग लाइक नॉर्मल क्लोथ, जेनेरिक स्टफ. तो वही बात आती है इस पर, लाइक हम आउटफिटर्स वगैरह की बात करते हैं. जैसे आउटफिटर्स आई डोंट थिंक मे बी इट शुडंट इवन बी इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट. It's a fast fashion brand. There's no narrative behind their designs or their products. Yeah. It's just clean, साफ सुथरा, normal stuff. अगर हमको compare करें लाइक बाकी जो रिटेल ब्रांड्स हैं इस वक्त, उनके साथ काम करें, वन हो गया, ब्रेकआउट हो गया, स्टफ लाइक दैट. हाँ, उनकी गेम उनसे बहुत ऊपर चली गई पिछले 2-3 साल में. They've pulled away. Yeah. तो ये एक चीज़ है. देखो ना, there's only a couple of components, right? One is quality, the other is marketing, and Outfitters seems to be doing both of them really well. Exactly. But again, वही वाली बात है कि do they have clear-cut messaging? No. Besides the generic stuff, कि यार we're not harming the environment, we're not, we're for Pakistan. ये 2-3 चीज़ें तो yeah, okay, obviously, right? But they don't have, like Fatwa has some bold shit that they do, right? And you want to be included in that conversation. Obviously. Yeah. What goes into, so okay, now again ये इतनी सारी बात हुई क्वालिटी के बारे में. Once you're like okay, now I have I think outfitters, sorry मैं आपकी बात काट रहा हूँ, I think outfitters को ज़रूरत भी नहीं है. Bro, of course not. ठीक है, उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इस तरह के स्टफ की. They know what the masses want. Basically ये हमारे ऊपर एज अ ऑडियंस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि हमने क्या पहनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं. तो वो बिल्कुल मतलब देयर विनिंग बेसिकली. In all honesty, Outfitters is a profit maximization concern and they would make whatever we want to wear. Exactly. Right? हमने उनको दिखाया ये पहनना है, they're like cool, ले लो. कल हम बोलेंगे हमें, just for instance, recently in past winters में they had this beautiful line of sweatshirts. I bought भरी पेट की मस्ती अल्लाह रहम करेगा, but I bought 3 colors. कल अगर अगले विंटर में बोलता हूँ Outfitters मुझे V neck sleeveless sweaters पहनने हैं,
they'd be like, cool, pehno, ye le lo, me being the masses, obviously. And that's fair. But okay, so you're like, okay, mujhe jo hai quality कपड़े बनाने फास्ट फैशन ब्रांड नहीं बनना, फास्ट फैशन ब्रांड बनना ही है. हाँ. How do you go first off, how did you figure out this blend, whatever this blend is? How did you figure that out? Okay, so I mean, I'll be completely honest. Yeah. ठीक है. So like a huge shout out to Rasta Official. Of course. Yeah. Basically this fabric is not, I mean, it's not unknown. ये वो fabric है जिसके like आप लोग sweatshirts पहनते हो, like यहाँ पे outfitters वगैरह की hoodies बनाते हैं. It's the same fabric. Okay. Kind of more or less. GSM का फर्क होता होगा थोड़ा बहुत. अच्छा, what is the fabric? It's cotton? It's cotton terry fabric basically. It's cotton terry fabric. जो like sweatshirts वगैरह पे होता है. Okay. तो like prior to that I was making like जैसे हम normal t-shirts पहनते हैं, normal cotton jersey fabric की t-shirts होती हैं slim सी. हम सिर्फ टी-शर्ट्स को उन्हीं के साथ एसोसिएट करते हैं. तो लाइक रास्ता लाइक बीइंग अ ग्लोबल ब्रांड, सिंस उनकी लाइक काफ़ी मार्केट अब्रॉड है जहाँ पे विंटर्स होते हैं, तो उनकी जो टी-शर्ट थी बेसिकली वो इस फैब्रिक की थी. ठीक है. हालांकि दिस फैब्रिक लाइक आई विल बी ऑनेस्ट ये बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है लाइक पाकिस्तानी वेदर के हिसाब से. ऑब्वियसली लाइक ये फॉल में पहन लेंगे, आप जब स्प्रिंग से पहन लेंगे, ये सीजन है बेसिकली इसका, अगर पहन सकते हो उसको. लेकिन जो इसकी फॉल है, जो लाइक इसकी लाइक पूरी ड्रेपरी है जो बॉडी पे आप पहनते हो ओवरसाइज सिलुएट में बेसिकली, तो लाइक इट लुक्स वंडरफुल एंड ड्यूरेबिलिटी एंड ऑल दोस थिंग्स. एग्जैक्टली, यस, ये भी चीज़ें आती हैं. तो लाइक इसमें आपने कोई चीज़ की भी है, इसके ऊपर कुछ प्रिंट्स हुए हैं, तो लाइक वो चीज़ ज़्यादा उभरती है अगर आप एक नॉर्मल टी शर्ट के ऊपर वो करो. तो बेसिकली वहाँ से आई गॉट द आइडिया. थोड़ा रिस्की भी था सिंस रास्ता हैज़ लाइक अ ह्यूज मार्केट, लाइक यहाँ नहीं बिकता, ठीक है ना भाई, बाहर से हो रहा है, इधर हो जाए देखना सेल आउट वैसे भी. तो लाइक मेरे लिए ये था, मैंने कहा नहीं यार वी कैन स्टिल ट्राई दिस, क्योंकि मेरा पर्सनल बिजनेस साइड से शायद मैं चीज़ों को नहीं देखता इतना ज़्यादा, सिंस मैं पर्सनल उससे ज़्यादा देखता हूँ. तो मैंने कहा यार नहीं, ये यहाँ पे होना चाहिए, लाइक लोगों को यहाँ पे भी पहनना चाहिए, बिकॉज आई लव टू वेयर स्टफ लाइक दिस इधर भी. हाँ, that's my question is coming from this exact thing कि आपकी you have no formal education in this stuff, not in the makeup of materials, not right now, लेकिन लाइक अच्छा तो ये पहली बार हमने बात की नहीं, लाइक बेसिकली करके आ रहा हूँ. तो लाइक आई एम बेसिकली करंटली अ स्टूडेंट in the Pakistan Institute of Fashion and Design. Oh wow, wonderful. Yeah. Okay, so you do know. All right. Okay. अब जाके I know. Okay. So I recently got into the textile department. अब वो सब recent है. Okay. I started out the brand back in 2019, like A levels में जाके A1 में मुझे कुछ नहीं पता था. Okay. तो like I came, मतलब brand पहले launch किया, वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू है कि यार ठीक है अब करियर वगैरह में क्या करना है, कुछ करने आगे इसी के अंदर कुछ करते हैं. ठीक है, लाइक टुक अ लीप ऑफ फेथ. That's beautiful. I think that's beautiful. Yeah. तो I honestly don't think, मतलब where financially शायद आपके, I don't know what your walidain think about this, what your parents think about this, but financially this might not make sense because you don't want to have all your eggs in one basket. But if you want to make a go of it, and if you want to occupy the same space as people that are ridiculous, like Rasta, like Fatwa, like these people, I know where you're going. You can't half-ass this shit. You can't be like, यार हाँ शायद लेकिन मैं business पढ़ लेता हूँ. Bro, please. Exactly. Business आ जाएगी आपको आ जाएगी. Business is not like, when people are like, oh, we want to do MBA. यार MBA जो है ना वो 30 40 साल के लोग भी कर लेते हैं. Exactly. MBA का first become excellent at what you're going to do. Like that's what I'm saying, man. You have to have an advantage, a competitive advantage. I have not abhi tak had a podcast with the people from Rasta. I would love to, right? Yeah. Simply because I want to pick their minds about this. Like, because I'm sure they're not normal people. I'm sure they're not run of the mill normal. Yaar main soch raha tha kisi din ke, because outfitters jo hai na, again, we just keep, I don't mean to signal outfitters out, but I'm just, outfitters is just, again, an excellent fast fashion brand. Yeah. आउटफिटर्स कोई सेठ चला सकता है, ठीक है, बिकॉज सेठ जो होते हैं उनकी फिंगर होती है पल्स पे कि यार अभी मासेस को क्या डिमांड है. ये डिमांड है ब्रो, मार्केटिंग कैंपेन लगाओ और ये कपड़ा बना लो और जो है ना बेच दो. बट someone like Rasta is the opposite of that. Exactly. They're like, they make the trends, exactly, like stuff like that. They're like, we're going to tell you what is cool, right? You're not a normal person to do that, because all profit maximization concerns go out the window, where if you sell out, but also you could be a flop. Yes, exactly. यही है वैसे. Risk है ना, इसमें से risk है. Yeah. They take the risk. Yeah. And I feel like Rasta को अगर हम तो mention करें, a huge part of the credit, I mean, जो उनके सक्सेस का रहा है वो जाएगा
to the ability of Zain Ahmed, basically the creative director. Yeah, absolutely. He's a great man. Dude, अच्छा, he's also from the looks of it, मैंने सिर्फ एक ही बार बात की उससे Instagram पे, he's also a really fun person. Yeah, I mean he's a creative genius. मैं उससे एक मरतबा मिला हूँ, like तो अगर हम इस topic पर आ गए, Zain is basically my role model. Okay. He's like my favorite designer. Okay. So Zain like tops the list of my favorite designers and All stuff. right. Like, he's someone who I really look up to. Okay. Zain Ahmed is the thing for me. Okay. Because in a way or two, you know, like he sort of let me on my own culture, my own voice. ठीक है? In a way कि like he makes the stuff. ठीक है? ये नहीं देखता कि यार ये कोई पहनेगा, ये तुम पहनोगे नहीं. ठीक है? He makes the stuff. He's हाँ exactly. He's just true to himself. ठीक है? उसको पता है कि जो मैंने बनानी है ये चीज़ मुझे पसंद आ रही है, मैं ये बनाऊंगा. आई एम एक्सपेरिमेंट, ये बनाया, डाल दिया. लोगों को नहीं भी पसंद आ रहा, क्योंकि अब आई मीन रास्ता को अगर लाइक इतना लोग अप्रिशिएट करते भी हैं, लेकिन लाइक काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो लाइक जिनका नहीं इतना एक्सपोजर जो भी, तो मतलब वो कहते हैं यार ये क्या चीज़ें हैं. लाइक ऑब्वियसली हेट आता है आपको. Bro, I think as a society, anything we don't understand, we resign ourselves to hate. Exactly. And I don't know, I get, you know, maybe, I don't know, maybe that's helped us survive in the past. Right, but we're not in the past anymore, ना? Yeah, right. अब जो है everything that's different cannot be hated, नहीं तो हम कहाँ पहुँचेंगे इस तरीके से? You know, and वही वाली बात है. I don't know if Rasta would have done this well had it not garnered international appreciation, right? True. That's another thing कि इतना अच्छा काम है, साफ सुथरा काम है कि उसको international recognition. They weren't appreciated enough either वैसे. No. Like अब जाके we can see that hype. ठीक है, वो ठीक है 3-4 साल हो गए ब्रांड को. और अभी बाहर से आ रही है ना. अभी भी बाहर, लेकिन वो बाहर से आई है, मतलब लाइक ऑपोजिट आप देख रहे हो. लाइक यहाँ से पहले आपको एप्रिसिएशन मिलती है, यू गो अब्रॉड एंड स्टफ लाइक दैट. को बिल्कुल ऑपोजिट सीन है. एंड एनीवन, वही आपका भी, आई थिंक अगेन यू ऑक्यूपाई द सेम मार्केट वेयर I don't know, man. I guess now because people like Rasta and then even Fatwa to some degree have paved this way for you. I love Fatwa, by the way. It's a fucking fantastic, like visual, crazy dude. Like visual game जो है Fatwa की, it's amazing. They're ridiculous, dude. I don't know. But I'm saying this to you. Visually, मतलब जिस तरह वो like उनकी जो मैं किससे इसको एक्सप्लेन करूँ, लाइक विजुअल जो मतलब उनके जो भी है ना, सारा जो आर्ट है, स्टफ लाइक दैट, उनकी कैंपेन्स वगैरह वो बहुत रॉ होती हैं, लाइक रॉ. यस, Abdullah Kasumbi, I have said this before, he's a mad genius. He really is. I don't know how else to say it. And also, he is someone, this is what's really brilliant about him. He is someone, like, I don't think that there is a greater critic of Abdullah Kasumbi than Abdullah Kasumbi. And that is so refreshing to someone like me. Ki yaar, ye banda, he'll always push himself. Like, his engine is within his own self. Like, he can just keep pushing himself because he could create this stuff in a vacuum, because he'll just never be happy with his own work, and so he'll keep pushing, you know. And that's where all this craziness comes from. You know. Anyways, like you were saying, now you are educating yourself in this stuff. Yeah. ये जो material है shirt का, this came from a Rasta, inspired by a Rasta. Inspired by Rasta, like sort of. Yes. Inspired by Rasta. Yeah. Okay, so you figure out कि इस किस्म की शर्ट बननी चाहिए. What goes into like finishing it off? Now अब material भी आ गया, size भी आपने बोला oversize design, fit. you know, like अगर हम design aspect के बारे में आए तो like almost all of my pieces have this certain narrative behind it. Every single one? Almost every single one. Okay. Like the shorts you're wearing. Yeah. इस पे जो ग्राफिक है, लाइक मेरे साथ मैं और एक असिस्टेंट होता है मेरा, लाइक वी क्रिएटेड दिस ग्राफिक सिंपली, यू नो, लाइक फ्रॉम बीइंग इंस्पायर्ड. जैसे खोखे होते हैं यहाँ पे, शॉप्स होती हैं, छोटी किराने की दुकानें होती हैं, ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह होते हैं. मतलब ये आप जाओगे वहाँ पे, यू नो, ये लिखा हुआ आपको कहने के मिल जाएगा, उधार बंद है, उधार मन है, लाइक शायद अब याद आ रहा हो. तो ये वो चीज़ें जो लाइक हम नॉर्मली देखते हैं, लाइक ये हमारे स्ट्रीट कल्चर का पार्ट है. लाइक हमारे कल्चर का पार्ट भी है, लाइक काइंड ऑफ सब कल्चर का जो भी कह लो, लाइक विजुअल कल्चर जो है हमारा स्ट्रीट का, उसका पार्ट है. लाइक हम कोई इतना नहीं इसको लाइक इतनी ऑब्जर्व नहीं करता. तो लाइक बेसिकली हमारी डिज़ाइन लैंग्वेज ही है कि लाइक हम उन चीज़ों से इंस्पिरेशन लेते हैं, ऐसी चीज़ों को अपनाते हैं अपने कपड़ों के अंदर. मेरी भी जो इन्फ्लुएंसेस हैं आते हैं पाकिस्तानी सब कल्चर से ही आते हैं. सब कल्चर्स हो गए, स्ट्रीट्स हो गए बेसिकली, तो हम वहाँ से चीज़ें उठाते हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं उसके अंदर. तो दिस आइडिया केम टू मी लाइक रैंडमली, लाइक एक कॉइन है, ठीक है, और उसमें लिखा हुआ उधार बंद है, लाइक इट कॉम्प्लीमेंट्स द कोट. एंड आई थिंक यू आर टू यंग टू नो दिस, बट हमारा एक 5 रुपये का सिक्का होता था.
देखा है कभी आपने? या देखा This reminds me of that. I just noticed. I was like, हाँ यार ये तो होता था. है अभी Bro, कहाँ है? काइंड ऑफ कहाँ है? 5 रुपए की क्या अहमियत है bro? अल्लाह रहम करे. And I don't mean this in a dismissive way, but like our currency is just devalued to the point where it is what it is. Anyway, so you were like, okay, that went into these shorts. What about this shirt? सो बेसिकली इस शर्ट की जो बैक पे डिज़ाइन है इट्स अ मैच बॉक्स Okay. काइंड ऑफ, ठीक है, एक माचिस की डब्बी है. तो इसकी स्टोरी यहाँ से आती है कि छोटे होते हुए जब मैं नानी के घर जाता था तो मतलब वो ऐसी जगह पे रहती, नानी बेसिकली शी लिव्स इन इकबाल टाउन इन लाहौर. तो लाइक एक पुरानी सोसाइटी है वहाँ पे, ठीक है, ओल्ड लाहौर के पास. तो वहाँ पे उनके घर में जो माचिस की डब्बियाँ आती थी ना, ठीक है, बड़ी विंटेज किस्म की आती थी, बड़ी मज़ेदार किस्म की. उस तरह की नहीं होती जो नॉर्मल हमारे यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, अर्बन सिटी में मिल जाएंगे. हॉकी सुपर हॉकी, हाँ वो शीट नहीं थी वो. नहीं, it was real. इट वॉज रियल. तो उस पर लाइक खैबर वगैरह बड़े मज़ेदार किस्म के ग्राफिक्स होते थे, ठीक है, इस तरह. और उनकी बैक साइड पे ना कोई ना कोई वो होता था, कोई कोट होता था इस तरह का, अकवाले ज़रीन टाइप, कोई मतलब कुछ होता था, कोई लेसन होता था, इन्होंने कुछ लिखा होता था पीछे, कोई अच्छी बात है. Yeah. तो लाइक इसकी इंस्पिरेशन बेसिकली वहाँ से आई है. Bro, yeah, whatever. I mean, what happened to those days, man? When we used to take pride in every little thing that we did. I mean, you know, हमारा दूध भी खालिस होता था. दूध की बोतलें बड़ी शानदार होती थी एक ज़माने में. You know, we used to clean our own streets, wash them. We used to watch out for. What the fuck happened to us, man? I don't know. That should be your next design. What the fuck happened to us? No, I'm kidding. Thinking of putting it on a t-shirt. Allah khair करेगा जानी, नहीं Ban हो जाऊंगा. ऐसे नहीं बोल. But all right, so this came from that. Yeah. And again, this signifies what exactly? Just that vintage feel? Just that? Nothing. Nothing. That's just that. इसके पीछे एक कोट है. Okay. Like, इसके पीछे एक कोट जहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल माचिस की तीली के नीचे कि साथ वहाँ तक मतलब जहाँ तक. Oh. ठीक है. तो लाइक कोट की भी पीछे एक स्टोरी है. तो लाइक मेरी डिज़ाइन लैंग्वेज में लाइक आई ट्राई टू लाइक इनकॉर्पोरेट माई पर्सनल फीलिंग्स एज वेल, जैसे मैंने मेंशन किया. तो कहीं ना कहीं से कोई मेरी कोई बचपन की कोई बात हो या कोई ऐसी कोई चीज़ हो, लाइक मेरी स्टोरी है इन सब में, लाइक कपड़ों में कहीं ना कहीं होती है वो. That's fantastic, man. तो ये उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है कहीं ना कहीं. That's cool. तो So you're also speaking about materialism then. Imagine then that the matchstick is symbolism for being used up as a material, you know. Are you getting it? Yeah, बस देखो क्या बात है यार. बस पहुंच गए हैं. बस ये पहुंच गए हम पहुंच गए यहाँ पे. अल्लाह रहम करेगा. Okay, so a few other I think honorable mentions while we're talking about quality. Young Standards का नया merch देखा है? Young Standards का merch मैंने देखा हुआ है. हाँ. मुझे लाइक पर्सनली डिज़ाइन लैंग्वेज इतनी वो नहीं करती, लेकिन मतलब क्वालिटी वाइज में लाइक हाँ नहीं मैंने फील नहीं किया वो. लाइक शानदार है. अच्छा. So good for them. I'm just, dude, I'm super excited for anyone to put out quality shit now because I'm just, yeah bro, हर जगह पूरी दुनिया का सामान यहाँ से बन के जाता है. सही बात है. How are we so incapable of creating? We're not anymore. That's what I'm trying to say. Is Alhamdulillah, for the longest time, this has been part of my frustration. अब कल्चर अप्रोप्रिएशन की तरफ हम नहीं जा रहे. वहाँ से अब एप्रिसिएशन वाला टाइम शुरू हो. Yes, absolutely, bro. Because the thing is, आप सोचो ना, दुनिया जहाँ का बेहतरीन denim यहाँ बनता है. Exactly. For the longest time, we've not had good denim companies. How does that make sense? कि यहाँ पे आपके पास you just don't have that kind of denim here. Exactly. Zara की पैंट चाहिए सबको, ठीक है, पीछे बन रही है, ऑलगोड में बन रही है, कहीं पता नहीं. Exactly. Like Levi's भी बेशक, I guess. Yeah. Diesel, bro. Diesel यहाँ बनता है. Yes. It's just confusing. रिटेल सेक्टर जो है ना हमारा, ये मतलब इस चीज़ में नहीं आ सका. तो इसलिए लाइक रास्ता की अगर हम इतनी वो करते हैं ना बार बार, क्योंकि वो यही था कि लाइक रास्ता वाज लाइक बेसिकली लाइक द फर्स्ट ब्रांड जो मतलब यहाँ से उठा विच ऑल्सो रिप्रेजेंटेड आवर कल्चर इन अ वे, ठीक है, आवर आर्टिसानशिप, आवर कल्चर हेरिटेज उसने रिप्रेजेंट किया. मतलब उन्होंने ओन किया इस चीज़ को. फिर उसको अपने जिस तरह भी वो लेकर के उन्होंने किया. तो शायद इसलिए हम उनको इतना मेंशन करते हैं कि हम नहीं करते थे. हम मतलब हम अपने कल्चर से ही इतना दूर हैं, ठीक है. अभी भी शायद मुझे लाइक बहुत रिव्यूज़ मिलते हैं, मैंने अपनी कोई स्टफ पहना हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर टिपोग्राफी है, उर्दू वगैरह जो भी है. मतलब पीपल डोंट टेक इट सीरियसली, जैसे मैंने आपको बताया ना, दे माइट मेक फन ऑफ इट. ओके. मतलब लेकिन लाइक कुछ को लाइक बहुत जैसे मैंने इंटरेस्टिंग लगती है जो समझते हैं इन चीज़ों को. लेकिन रास्ता पे जैसे मैं बात कर रहा था, मतलब दे हैव डन एन अमेजिंग जॉब इस चीज़ में. इसलिए काफ़ी ब्रांड्स उनसे इंस्पायर्ड इस सेंस में है कि उन्होंने कहा नहीं यार हम ये कर सकते हैं, लाइक वी शुड ओन आवर ओन वॉइस, आवर ओन कल्चर. आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हो ना, दे डोंट टेक दिस स्टफ सीरियसली. I think it's very, very interesting how quickly that conversation is happening and how quickly there is a shift in what is
you know, what is business casual, what is to be taken seriously, what is appropriate, Exactly. you know, what is proper. Like that, even 5 years ago, it was, you know, inconceivable for people to for CEOs to dress a certain way. 10 years ago, 5 years ago, 3 years ago. But I think, mashallah say, young people like yourself are pushing both of those boundaries and pushing both of those envelopes. So one, what is a CEO? There's an image that pops up na, in your mind. CEO क्या होता है यार? Mid to late 50s में एक बंदा होगा, उसने एक किस्म के कपड़े पहने हुए होंगे, ये होगा CEO, right? So you're a CEO technically, right? You don't look like it, but what does a CEO look like, dude? International आप जाके देखो ना, standard for it कोई चीज, थोड़ी आंखें तो खोलो ना, देखो तो सही ना कि CEO क्या होता है. Exactly. Mark Zuckerberg is the CEO of one of the biggest companies in human history. Wears a plain t-shirt. Yeah, you know, wears a plain t-shirt. You know, so I think it'll take us some time, because generally हमारा जो societal discourse है ना, it follows Europe का, North America का, मतलब the West का. But I think we're developing our own voices now. Yes, finally. हाँ, alhamdulillah. I think we're getting there where we'll be like, यार, enough of this shit. Eventually, you know, हाँ. Yeah, we have to tell our own stories, so to speak. लेकिन यहाँ पे हमें एक दूसरे को support भी बहुत करना चाहिए. Like the brands are making it. Yeah. I feel like अब शायद उनको बजाय इसके के पूरी वो अटेंशन चाहें, लाइक उनको चाहिए कि लाइक हम ब्रांड्स एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें यहाँ पे आके. लाइक स्टार्टअप्स भी हैं जिस तरह के, जैसे मेरा ब्रांड है, लाइक आई मीन आई लव टू कोलैबोरेट विद अ ब्रांड जो जिसकी डिज़ाइन लैंग्वेज इस तरह की हो, जो कुछ डिफरेंट करना चाहता हो. Do you have someone in mind? आई मीन लाइक रास्ता ऑफिशियल, छोड़ देना रास्ता को, और कोई जैन. अच्छा वो तो हो गया ना, और उसके अलावा फतवा, लाइक ऑब्वियसली फतवा, लाइक इस तरह के ब्रांड which are like really raw in their design. Again, all of you, then I think maybe Rasta जो है financially speaking is bigger than you, but all of you occupy these niches, na? Yeah. Wouldn't you want to maybe have a conversation with someone like Kazi, who was once an industry leader, is still maybe, I don't know, but एक ज़माने में they would represent the youth. Kazi would, right? So wouldn't you want to be interested in something like that? I mean, yeah, sure. Could be fun. ऐसे तो वो भी नहीं आएंगे. हाँ, आ जाओ. नहीं, like sure, लेकिन वही बात है ना कि डिज़ाइन लैंग्वेज पे डिपेंड करता है. लाइक उनकी बिल्कुल ही what if they let you design the whole thing? They would just handle the marketing and the mass production of it. That would be amazing. I mean, yeah, na? Something like that. You know, I don't know, man. I think someone like some people like or no, companies like Khadi or outfitters, I don't know why they should mind something like that. Yeah. Because if pure profit maximization is the concern, right? They have powerful marketing apparatuses. रिस्क नहीं लेते हम. रिस्क नहीं लेते हम रिस्क नहीं लेते. और सेकेंडली शायद पंजाबी तो खैर वैसे भी, लेकिन जनरली पाकिस्तानी भी हम नहीं चाहते कि हमारे साथ वाला जो है ये भी उस तरह ऊपर आए. क्या यार मैंने बहुत स्ट्रगल की है, मैं ऊपर आ गया हूँ, नहीं मैं इसकी क्यों इतनी हेल्प करूँ. लाइक मेजॉरिटी, स्पेशली पंजाबी की अगर मैं बात करूँ, मुझे लाइक नहीं पता सिंध में लाइक क्या है, कराची में क्या है, ऐसे ही ब्रो माशाल्लाह, ऐसे ही काइंड ऑफ, बस पूरा यही हाल है. तो जी, तो हम नहीं चाहते कि भाई अब साथ वाला भी ना ऊपर आ जाए किस ना किस तरह. ये तो ऊपर चला जाएगा यार मेरे से, अगर मैंने इसकी उंगली पकड़ ली ना यहाँ पे. इन जनरल हमारा अभी थोड़ा ये है, थोड़ा फैमिन मेंटालिटी है, ऐसे कि कम है मैं खा लूँ. सिक्योर हो जाते हैं हम फौरन कि यार शेड इसको ये थोड़ा सा रिकग्निशन मिलना शुरू हो गया. Are there, okay, so you've only had a brief history with this brand, with Thrive. Lekin do you have stories of that sort where people tried to pull you down? You don't have to name names, but like ऐसा है कुछ? नहीं, इतना नहीं हुआ अभी तक, अल्लाह का शुक्र. लेकिन आई गेस पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा हुई हैं. ओके, अल्लाह का शुक्र. देखना भी उन्हीं को चाहिए मेरे ख्याल से. Absolutely, इतनी भी शॉर्ट हिस्ट्री है तो उसके अंदर लाइक ऑब्वियसली लाइक यू नो व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट फीचर ऑन प्रोपेगेंडा एंड लाइक ऑन ई ट्रिब्यून, तो लाइक वो चीज़ मेरे लिए बड़ी वो थी कि यार शिट्स रियल. अब जो है ना, अब इम्पैक्ट पड़ रहा है. हाँ, लोग समझ रहे हैं कि ठीक है कोई बंदा कोशिश कर रहा है, डिफरेंट चीज़ें भी निकल रही हैं, लोग देख रहे हैं उसको. ठीक है, ये चीज़ करनी है. I'm really happy with your marketing stuff, dude. I'm really happy. Are you? I mean, मतलब मिनिमल है तो क्या हुआ? बहुत मिनिमल है. I suck at marketing. इशू मेरा यही है क्योंकि like since I'm managing almost all the sectors of the business, तो और साथ में पढ़ भी ना हूँ ऑब्वियसली. राइट. तो वो नहीं छोड़ना ब्रो, वो नहीं छोड़ना एग्जैक्टली. ये चीज़ें हैं तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है ऑब्वियसली. काजी भाई हर सेक्टर को उतना इंपॉर्टेंस, लाइक सिंस आई एम डिजाइनिंग भी, फिर मैं प्रोडक्शन भी देख रहा हूँ, अच्छा शूट्स भी प्लान कर लिए यार, इतने मुश्किल कैंपेन शूट्स. आउटसोर्स करो ना, क्या मसला है?
वही बात आ गई कि सिंस आई एम अ स्मॉल बिजनेस अभी तो you लाइक can't afford it. हाँ आई कांट अफोर्ड इट लाइक बहुत कुछ एक साथ Okay, fair enough. तो fair enough. काफ़ी ज़्यादा अभी फोकस उसी पे कि अपनी कैपेसिटी थोड़ी डेवलप करनी है I'm happy with the photo shoots and the video. They're amazing. I mean, नहीं- sorry मैं अपने ही कर रहा हूँ लेकिन नहीं- I mean I'm नहीं- really happy with my campaign हाँ. photos and the video stuff. They're good, they're fantastic. The people look good, the clothes look good. Yeah. और क्या चाहिए आपको? I have a great team for that, by the way. Okay. So like the guy who does the videography, Abdullah Riaz, like Okay. a huge shout out to him. I mean, Abdullah Riaz. तो yeah, Abdullah. तो मैं बोलने वाला था bro, if you're in Lahore, हाँ there's this little known person named Zain fucking Pirzada. Zain Pirzada, yes. ये जो like direct करते मानू वगैरह की videos Yeah, and bro. stuff like that. Zain Pirzada is a fucking gangster. You could, chalo, we'll talk about that after the podcast, how you can get in touch with him. But Zain Pirzada, I think, is also crazy. I think ये सब लोग crazy हैं bro. I think सिर्फ मैं माशाल्लाह से sane हूँ, normal इंसानों की तरह. आप भी बहुत crazy हो bro. आपने मुझे like literally लाहौर से बुला लिया. Bro, आप आ गए ना? मैं आ गया हूँ. मैं ज़्यादा crazy हूँ. Exactly, dude. You know, आप आ गए. But yeah, dude, I think there's all these wonderful people doing all this wonderful stuff. But I do feel the engine that drives them is dissent. I think, like yourself, most of these people were sick of how things were done. And True. that's okay, right? Everyone can get sick of how things are done. But not everyone can then decide, okay, someone needs to stop this. यहाँ तक भी ठीक है, लोग पहुंच जाते हैं. Someone needs to stop this. Someone needs to do something different. From someone needs to stop this to I need to stop it, that's a scary jump. And that's a scary journey. Yeah. Someone needs to stop this is easy, dude. That's a diffusion of responsibility. Obviously. Bro, किसी को इस चीज़ को रोकना चाहिए. Cool. कोई रोक लेगा. हाँ. आप सुकून से बैठे हुए Doesn't chips matter, खाओ, कोई फर्क पानी नहीं पड़ पियो. रहा. कोई मसला नहीं है. From that to यार मुझे इसको रोकना चाहिए. Exactly. All the difference in the कोई world. नहीं करता bro. And that's terrifying, right? But mashallah say you took a leap and so far it's paying off. Alhamdulillah. What do you like? Okay, so you're inspired by all these brands, but they are also technically your competition, right? Kind of, but like मैं इस तरह नहीं देखता और Bro, like मैं हूँ भी नहीं किसी का competition bro, like But you know the like जो thing बात is, है. competition is a healthy thing, man. And Yeah. competitors are healthy. Like competition is a good word. People need to stop. People think competition is a bad word. Competition के बगैर bro हम कहीं नहीं पहुँचते. ये सही बात है. Competition is what drives you. Like if you don't have people around you that keep you up at night, you're never going to be good. You're never going to be the best, you know. If you're not constantly thinking, यार इस बंदे ने इतना अच्छा काम कैसे किया, मुझे भी इतना अच्छा काम करना है. There's a difference between jealousy and envy. One of them is haram, right? Envy is haram. लेकिन envy is not what I'm talking about. Envy, you should never envy your competitors. Envy क्या होता है कि अल्लाह मियाँ जो भी चीज़ इसके पास है वो इससे हट जाए, वो इसको ना मिले. That's bad. Jealousy is अल्लाह मियाँ इसके पास जो भी चीज़ है वो मुझे भी चाहिए. मैं भी कर सकता हूँ. How is that bad? नहीं है bad. That's not bad at all. You know. So again, technically, I just reiterate. Yeah. You do occupy a position that would make you a competitor to these people, right? How do you navigate that? Because these people are doing some fantastic work. Yeah. How does that drive you? In a positive and a negative way both. Okay, negative why? Negative भी है क्योंकि you know like since मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी attention divert सिर्फ business पे नहीं है, like since मैं एक student भी हूँ, लेकिन like I'm fully committed to the business as well. In a way, you know कि मैं जो चीज़ करता हूँ ना काजी भाई बस मैं पे लग जाता हूँ उस पर. अब मैंने 2018 में शुरू किया था, 19 में शुरू किया था और अभी तक मैं कर रहा हूँ. Like people इस फैशन वाली इंडस्ट्री में ना या लाइक इस तरह जब से ये ऑनलाइन काम बूम पर आया है, लाइक एवरीवन कैन यू नो लाइक स्टार्ट हिज ओन ब्रांड एंड स्टफ लाइक दैट. तो लोग आते हैं और फिर वो बहुत जल्दी चले भी जाते हैं. इसमें बहुत लोग आते हैं क्योंकि इसमें ग्लैमर भी है. ऑब्वियसली इसमें ग्लैमर है, इसमें शोशे हैं और कपड़े शपड़े, यू नो. तो मेरा ये था इसमें बेसिकली सारा कि मैं नहीं चाहता कि इस पूरे सिलसिले में मैं कहीं कंपटीशन को देख के ना कि लाइक यार इतना कंपटीशन है, ठीक है, लाइक फलाना ब्रांड अब ये कर रहा है, मेरी अभी ये चीज़ लॉन्च नहीं हुई, तो मैं अपनी क्रिएटिव साइड को कहीं डैमेज ना कर लूँ. अल्लाह रहम करे. ओके, लाइक मेरे लिए मेन फोकस जो है ना, मैं इस पर आऊँगा पॉइंट पे, लाइक कंपटीशन ठीक है अपनी जगह बिल्कुल सही है और येस इट डज इफेक्ट मी. लाइक मैं बहुत सोचता भी हूँ उसके बारे में कि फलाना ब्रांड अब ये कर रहा है, उसके अब ये लॉन्च आने वाली है, फलाना ठीक है बहुत क्रेजी काम हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो यार, ठीक है. इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं क्योंकि जब आप इसी चीज़ के बारे में बहुत पैशनेट होते हो तो ऑब्वियसली ये चीज़, अगर आप एक एथलीट हो आपको कहा यार वो इतनी मेहनत कर रहा है, मैं ही नहीं कर सकता हूँ ये स्टफ. लेकिन इस सब में जो हमारा काम है
बेसिकली फैशन में या हम डिज़ाइन ओरिएंटेड जो भी हम कपड़े बना रहे हैं, इसमें आपकी क्रिएटिविटी जो है ना वो डैमेज हो सकती है. एब्सोल्युटली. ठीक है, अब जी फलाना ब्रांड ने कर लिया है, ठीक है यार मैं भी कुछ सिमिलर कर लेता हूँ कि कुछ चीज़ सिमिलर बना लेता हूँ. बिकॉज यू नो इट वर्क्स. हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि पता चल गया कि हाँ ठीक है ये चीज़ हो भी सकती है और ये सेल भी कर जाएगी शायद, यू नो स्टफ लाइक दैट. तो यार मैं भी कर लेता हूँ क्योंकि कंपटीशन आ गया, अब पता चल गया वो चीज़ बिक रही है. तो ये बहुत डैमेजिंग होता है क्योंकि मैंने बहुत सीखा काजी भाई, मैंने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया. मैंने बताया मैंने 3 टी-शर्ट्स बनाई थी, बेसिक थी काफ़ी, वो बिक गई. अगर बिकी ना होती तो शायद मैं इतना मोटिवेटेड ना होता कंटिन्यू करने के लिए. 2 महीने में बिकी, 2.5 में बिकी, लाइक 100 टी-शर्ट्स थी वो, ठीक है बिक गई, कंटिन्यू किया मैंने. तो मैं भूल गया मैं कहाँ पे. आप कंपटीशन की बात करते हैं, हाउ इट मोटिवेट्स यू इन बोथ, अफेक्ट्स यू इन बोथ अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव वे. यू वर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव वेयर समटाइम्स यू फील लाइक इट माइट इनहिबिट योर क्रिएटिविटी. या और पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव यही है कि यू नो लाइक इट मोटिवेट्स यू टू लाइक गो ऑन. या लाइक आपको पता है कि यार सही है यार, यू जस्ट 21 राइट नाउ, Yeah. ठीक है, यू स्टिल स्टडिंग, यू आर बीइंग कंपेयर्ड टू ब्रांड्स लाइक XYZ जो कि बहुत काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और आपका नाम कहीं ना कहीं आ रहा है बीच में. बेशक जी कोई कह दे कि जी इन्फ्लुएंस्ड है वो गा रहा, वो फिर एक बहुत बड़ी बहस है, ठीक है. लेकिन आप इन्फ्लुएंस होना बुरी बात क्यों है? वो इन्फ्लुएंस देखिए अभी बंदे पे है. लाइक कोई उस चीज़ को कह के कह सकता है कि यार इन्फ्लुएंस्ड है, कोई दूसरा कह के इसको इतना नहीं पता क्या कॉपी है यार. हाँ, कॉपी जो है ना ब्रो, या इंस्पायर्ड इन अ वे के इंस्पायर्ड इज आल्सो गुड थिंग. इट्स अ गुड वे. I think, yeah, we are so again taken by just stupid uses of language. Because inspired, or even for that matter, what is the best form of flattery? Imitation, na? Exactly. So, and how does most art work? Most art is imitations that then people take and they kind of make their own. That's how most art works. Most art is inspiration. I see you. And then imitation, and then imitation turned into colonized into, you know, making it your own. तो मसला किधर है? मसला हमारी सोच में है. मसला हमारी सोच में ब्रो. ऐसे ही हम फौरन ना ऑन करना चाहते हैं चीज़ को कि अच्छा यार मेरा ब्रांड था, उसने ये चीज़ बना ली है, हाय मेरे से इतना इंस्पायर्ड था, काइंड ऑफ कॉपी कर ली है. जो भी अगर इसकी चीज़ें ये बिक भी रही है तो मेरी वजह से, बस देखो यार मुझे. हाँ ब्रो, आप लेकिन here's the thing ना, you keep doing that, but you can only do that in a corner somewhere. Like you're not relevant then. You know what I mean? You're hurting yourself by thinking like that. So again, do you, through this brand, do you want to engage in societal discourse? You want to have these conversations through your clothing, through your brand? Yes, obviously I do. Yeah, I do. Yeah. Yes. Like main focus मेरा यही है कि जैसे मैंने आपको बताया कि like अपने ऊपर ही रहे. हाँ. Like society के वहाँ like some of my pieces, you know, like they really talk about like certain situations going around the country. जैसे अब इस drop में the recent drop is like by the way it's called तरक्की ही तरक्की. What a weird name. तरक्की okay. तरक्की okay. Like ये satirical like way में like है कि it basically represents the, you know, like youth culture in Pakistan right now and our obsession with fame, success, तरक्की वगैरह. Sure. तो like इसमें like basically एक piece था the yellow hoodie. I don't know if you've seen it. Nice. तो like it's named like महंगाई hoodie, ठीक है. उसके ऊपर जो graphics हैं और जो उसकी design language है ना, basically like वो currently बता रही है कि जो inflation का जो rate जिस तरह ऊपर गया है ना, वो उस पर बात कर रही है. Okay. तो लाइक उसके पीछे जो ग्राफिक है, जो भी उसके पीछे एक लिस्ट है, ठीक है, ग्रॉसरी लिस्ट टाइप सी है, वो दिखाने प्राइसेस किस तरह बर्डिंग है. फिर देयर स्मॉल रेफरेंसेस हैं, पेट्रोल का भी एक है कि लग्जरी बन चुका है, फिर एक यू टर्न का भी है. Super cool. Okay. हाँ. Dude, listen, these are difficult conversations. Yeah. But we need to have them, man. You can't, like, how long are you going to avoid this for? True. You know, I mean, inevitable है ना. Like I was talking about with your grandfather and print going out of print going out of I don't know, out of fame, out of repute. We were talking about how print has been phased out, right? People need to understand, newspapers thought they were too big to be phased out. Yeah. You know? But they did eventually. But if all of them did, man, you know? And the ones that didn't, they survived because they adapted, because websites bani, because podcasts khole, because ye sab cheezein hui. You know, and now the New York Times, bro, the biggest, most read to chalo na bhi bolo usko, but one of the best newspapers, best in terms of production quality, not in terms of journalism and all those things, but you know, one of the best, well, like strongest strongest newspapers in the world,
eventually shut down entire printing presses, opened up a podcast, and just survived in another way, Exactly. and they evolved. And that's what happens. If you don't evolve, you die, Exactly. and that conversation needs to be had right now, because there's a lot of people still doing stuff, still stuck in their old ways, and they can keep calling you a copy or an imitation or whatever else. Lekin wo agar, if they don't step back and look at what's happening to them, eventually they're going to wake up one day and realize that they're done, man. They're right. really done. We spoke about how your expressive medium is fashion. Yeah. Right? Well, there's people that monopolize fashion. There's people who think कि fashion उनसे शुरू होता है, उनसे ख़त्म होता है. सही बात है. इनको आप कुछ भी, जो भी आप बोलना चाहो बोल लो. पर इस किस्म के लोग हैं, and they need to wake up, man. They really need to wake up, because there's people like you who don't have that much to lose. वो आपको imitation बोलेंगे, copy बोलेंगे, हमसे inspired है, जो भी बोल देंगे. It won't stop people like you. सही बात है. What will stop people like you, competition की बात कर रहा हूँ, Yeah. is for them to evolve as well, for them to include young blood in their teams, Exactly. stuff like this, and उससे फिर आपको ही मजा आएगा कि हाँ यार, अब जो है X ब्रांड या Y ब्रांड जो वैसे फास्ट फैशन करता था, अब वो भी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें बना रहे हैं. Exactly. Things that will last more than 2 washes. Cool. Things that have this interesting design. Fantastic. अगर हम ये सोचते रहेंगे कि हाँ, गवर्नमेंट जो है उन्होंने मे भी कुछ चीज़ों में मसला कर दिया, लेकिन हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बात करेंगे तो हमारी our lives could be at risk. Dude, I don't know, man. मतलब we die as a society उस वक्त. मतलब जब हम ये कर सोच लेते हैं ना, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ नहीं है ऐसे. टाइम्स आर चेंजिंग, और लोग करते हैं हर किस्म के इम्पोर्टेंट इशू पे बात होती है, बात हो रही है. अब फैशन में कुछ ब्रांड्स हैं ऐसे जो लोकली पाकिस्तान में भी कर रहे हैं. कोई सर्टन इश्यूज हो गए, कोई भी राइट्स के बारे में कोई बात होगी, दे आर ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ पोर्ट्रेइंग दोज इश्यूज थ्रू देयर क्लोथ्स, मैसेजेस उस तरह लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये सही है. बाकी जहाँ तक कॉपी की बात है काजी भाई, एवरीथिंग इज जस्ट नॉइज. शुरू में करता था बड़ा मुझे अफेक्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं थोड़ा सा वो रहा हूँ इंट्रोवर्ट रहा हूँ थोड़ा सा. तो जब इतना इंट्रैक्शन भी नहीं है लोगों से, इंट्रोवर्ट भी है बंदा, ठीक है, वो अपने आप को पुश भी कर रहा है कि नहीं ठीक है, अब इम्प्रूव भी करना है, इस तरह फलाना. अब हेट भी कभी कभार मिल रहा है, किसी रैंडम कॉपी कोई कह रहा है, आपको इंस्पायर्ड कह रहा है, जो भी. तो पहले बहुत फ़र्क पड़ता था उससे. ओके. अब वो कम हो गया है. लेकिन अब जब मेन फोकस यही है कि काम बोलना चाहिए. बेसिकली काजी भाई यही बात ही है ना, काम बोलना चाहिए. अब मेन फोकस इज़ राइट नाउ solely on the creative side of the business. डिज़ाइन लैंग्वेज ऐसी हो कि यार, अभी उनसे बात करता वहाँ पे से कि काजी मैंने कपड़े पहने हो, थ्राइव नहीं लिखा हुआ उस पर, ठीक है, वो पीछे से कोई देखे या उसकी कोई डिज़ाइन लैंग्वेज देखे होगा कि हाँ ठीक है यार, ये थ्राइव के कपड़े, ये चीज़ होनी चाहिए. बेशक वो इंस्पायर्ड हो या ना हो, लेकिन मैंने आया हूँ, मैंने सबको मेंशन भी किया जिनसे मैं थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड रहा हूँ जितने हद तक. लेकिन हर किसी की अपनी एक आप कह लो कि वे ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है. अब आपको कोई एक और ब्रांड है जी, उसकी भी अगर वो भी उर्दू में टिपोग्राफी यूज़ कर रहा है, डिज़ाइन लैंग्वेज में, आप भी करो, आप इंस्पायर्ड या कॉपी दूसरे को नहीं कह सकते. भाई आप दोनों एक ही कल्चर में हो, ठीक है. काफ़ी ज़्यादा इसलिए लोग, मैं रास्ते को बेसिकली मेंशन इसलिए कर रहा था कि उनकी तरफ से भी बहुत ये होता रहा है कि जी उनसे बहुत ब्रांड्स इंस्पायर्ड हैं, तो ये तो कॉपी कर रहे हैं, तो ये. लेकिन कोई ब्लंट कॉपी नहीं होती. कुछ ब्रांड्स करते होंगे, ऑब्वियसली करते हैं, ऐसी बात नहीं है. जब आप अच्छा काम करें लोग करते हैं कॉपी, ठीक है. लेकिन काफ़ी ब्रांड्स ऐसे भी हैं जिनको शायद थोड़ी बहुत हेट इसलिए मिल जाती है कि जी ये बहुत इंस्पायर्ड लग रहा है, तो ये कॉपी, उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है. जबकि यार क्या मतलब, उन्होंने भी एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ बनाई है, बस उर्दू टिपोग्राफी यूज़ कर लिया, या उनका सेम वो ब्लॉक प्रिंटेड मीडियम है तो यूज़ कर लिया. तो नहीं, किस तरह को देखो ना टेक्निकली, लेकिन वो बहुत डिस्करेजिंग है. हाँ बिल्कुल है. एंड टेक्निकली अगर सिर्फ हम टेक्निकली एक बात करें तो फिर रास्ता भी तो कॉपी है ना. रास्ता जिन टेक्निक्स को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, देयर कल्चरल टेक्निक्स ना, देव बीन अराउंड इन द सब कॉन्टिनेंट इन पाकिस्तान फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर. पाकिस्तान तब था भी नहीं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, राइट. तो फिर टेक्निकली देयर आल्सो कॉपीइंग, एग्जैक्टली. ऐसे तो आप जितना उसको टाइम एज अ मेट्रिक अगर आप उसको एक्सपैंड करते जाओ
तो टी शर्ट्स वेस्ट की कॉपी तो है. इंस्पिरेशन चलती है ना आर्ट और डिज़ाइन में, कह रहे सबने बात की, इंस्पिरेशन चलती है, ऐसा ही है. इवॉल्व करती हैं. किसी का काम देखा यार, अच्छा मैं इसको अपने तरीके से इस तरह करना चाहता हूँ, तो ये तो चीज़ें चलती हैं. That's it, man. And as long as you're not appropriating someone's culture, वो थोड़ा गलत होता है मेरे ख्याल में. As long as you're not doing that, I think it's beautiful stuff. As long as you're admitting कि हाँ यार ये inspired है इस चीज़ से, ये उस चीज़ से inspired. जैसे for instance, एक चीज़ जो मुझे आजकल बहुत bother करती है कि if you're understood to be a leftist figure ना, फिर आप कल्चर अप्रोप्रिएट कर लो, कोई मसला नहीं है, आपको फ्री पास मिला हुआ. हाँ सही है. यू नो ऐसे ख़वातीन जो है वो बड़े बड़े नेल्स लगा के आ जाती हैं थिंकिंग कि दैट्स ऑल राइट जस्ट बिकॉज यू आर ऑन द लेफ्ट, बट दैट इज़ यू अप्रोप्रिएटिंग afro American culture. You know ये उनका है. सही है. तो do you know that's what you're doing? Like do you at least know that that's what you're doing? If you don't, then maybe read up on that stuff. Exactly. या हमारा wanton use of the N-word. That's just not all right, man, on multiple fronts. Exactly, कि हम exactly side पर हैं तो हमें नहीं फ़र्क पड़ता. हमें फ़र्क नहीं पड़ता bro. सही बात है. And that's the problem ना, as long as we don't have any consequences, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है. But to that end, वही वाली बात कि if someone's calling you a copy, we're all copies, dude. I'm copying someone right now when I'm podcasting. Influences होंगे ज़रूर आपके. Podcast शुरू किए यार, एमी तो नहीं शुरू कर ली शायद. Even podcast as a form of content creation copies radio copies conversation. Visually भी है साथ. ऐसा है bro. And radio copies conversation. Exactly. And conversation copies an interaction. तो फिर ऐसे तो फिर inspirations ही हैं सारी, evolve की हुई हैं बस. ऐसा है bro. बस bro, अब आपने और मैंने ना पूरे पाकिस्तानी मुआशरे के मसले हल कर लिए. और बताओ. सही बात है. कोई रह गया वैसे. अल्लाह रहम करे bro. What's so अभी ये recent वाली drop हो गई. Yeah. How do you go about planning a drop? Because I'm sure it's not just it comes from an idea, but I'm sure there's more to it than just that, right? There's like maybe so how do you start? तो like obviously season wise तो होता ही है. Like summers में आए हूँ या उसमें winters का time आ गया, ठीक है. तो first of all तो like मैं देख रहा हूँ कि like जैसे मैंने बताया कि मैं सारा individually सोचता हूँ कि यार मैं क्या feel कर रहा हूँ उस वक्त. तो लाइक अगर तो मैं थोड़ा बहुत लाइवली फील कर रहा हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ, तो ये क्या मैं कहूँगा यार ब्राइट कलर पकड़ते हैं, कोई ब्राइट कलर्स होने चाहिए, मतलब कलर पैलेट जो है ना थोड़ी वाइब्रेंट हो. तो इस मरतबा भी इस तरह ही था थोड़ा, जब कोई डिज़ाइन करने बैठे और डिज़ाइंस भी इस तरह के थे, ग्राफिक्स भी इस तरह के निकाले. तो ये चीज़ें पहले तो मैटर करती हैं कि भाई मैं खुद कैसा फील कर रहा हूँ या मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ. अच्छा ठीक है, अब ये टॉपिक है मेरा, जैसे मरतबा तरक्की मैंने चूज़ किया, लाइक इस तरह मैंने इन चीज़ों को लेकर जाने आगे. तो फिर कलर पैलेट भी उसी तरह की थी, ग्राफिक्स भी उसी तरह के, थॉट प्रोसेस बिल्कुल उस तरह का था, मूड बोर्ड बिल्कुल चेंज था. पहले मूड बोर्ड बना, ठीक है, सब इस तरह की चीज़ें मतलब मैं अपनी नोट्स में लिखता रहता हूँ चीज़ें. मैं जा रहा हूँ यहाँ से काजी भाई, ठीक है, हो सकता है मुझे कोई साइन बड़ा अच्छा लगा, मुझे कि रोड पे कोई साइन है या आगे चला हूँ मैं, दीवार पे कोई ग्राफिटी हुई है, ठीक है, कुछ भी हुआ, पेंट हुआ, या मेरे जो मेजर एक और इन्फ्लुएंस है वो ट्रक आर्ट है. ओके, ब्यूटीफुल. ट्रक आर्ट होगी, लाइक आर्ट भी नहीं बल्कि अब रिक्शे के पीछे कुछ लिखा हुआ है, दीवार पे कुछ लिखा हुआ है, ये चीज़ें लाइक स्ट्रीट में विजुअल ग्राफिटी, हाँ ग्राफिटी भी आ जाती है उसके अंदर, इस तरह की चीज़ें. ये लाइक एक बहुत मेजर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है फ्रॉम मी. तो फिर मैं देखता हूँ कि अच्छा ठीक है ये चीज़ पसंद आ रही है, अब इससे मैं एक कलेक्शन में कैसे डेवलप कर सकता हूँ कि लाइक मैं इन सबको एक चीज़ में लेकर आके बंद करके कि हाँ ठीक है अब ये कलेक्शन इस बारे में. ओके. तो फिर वहाँ से थॉट प्रोसेस शुरू होता है, मूड बोर्ड बनता है, फिर हम देखते हैं कि यार ठीक है अभी कोई कोड देखा है या ये रिलेट कर सकते हैं इसको, इसका ग्राफिक किस तरह का डेवलप करें, स्टफ लाइक दैट. फिर हम आते हैं कि ठीक है कलर पैलेट क्या होनी चाहिए हमारे इस मरतबा, और जो टी शर्ट्स हैं, फैब्रिक्स वगैरह, फिर हम जाके फैब्रिक सोर्स करते हैं. ओके, समझ आ गई. फिर फैब्रिक सोर्स करते हैं. ओके, सो इंस्पिरेशन, मूड बोर्ड, इंस्पिरेशन, फॉर्मुलेशन, मूड बोर्ड, कलर पैलेट, मूड बोर्ड में आ गया. फिर कलर पैलेट बनी, फिर मटेरियल ले लिया. और ना तो अगर मटेरियल पहले ले लें तो फिर आपको उसके हिसाब से ऑब्वियसली एडजस्ट करना पड़ता है. ठीक है. एंड मटेरियल से पहले ये भी आता है ऑब्वियसली व्हाट सीजन इट इज. हाँ यस, ऑब्वियसली ये भी चलता रहता है. एंड when you go for a material, is there stuff that you're avoiding? Are there particular material? नहीं, जो भी अच्छा लगे उस वक्त. ऐसे ही है, जो भी अच्छा लगे ज़्यादातर उसी पे है ज़्यादा, लेकिन लाइक मेन फोकस हैज ऑलवेज बिन क्वालिटी. ओके, ठीक है. अलबत्ता रिसेंटली क्वालिटी की वजह से और जब डिज़ाइन लैंग्वेज थोड़ी इंप्रूव होना शुरू हुई है, आइडेंटिटी थोड़ी बनी है, तो लाइक प्राइसेस भी थोड़ी इंक्रीज हुई हैं ब्रांड की ऑब्वियसली. लाइक मतलब अगर हमको कुछ और ब्रांड्स के साथ कंपेयर करें तो वो कोई मार्जिन नहीं है प्राइस में, कुछ बहुत अनफेयर है, कुछ भी नहीं मैं चार्ज कर रहा, लेकिन उसका लाइक मुझे बड़ा हेट आया है उस पर, लाइक बहुत एक बैकलैश है. क्योंकि जब मैंने स्टार्ट आउट किया था ना बेसिकली, तो वो ये आइडेंटिटी नहीं थी मेरे ब्रांड की, ये इमेज नहीं थी ब्रांड इमेज के, ठीक है ये अब एक टी शर्ट है, इट्स गोना सेल फॉर लाइक
4,000 और 3,500, ठीक है, जो भी इसके। हाँ. नहीं यार, ये तो लाइक 1,000 रुपीज़ की टी शर्ट वाला ब्रांड है, Okay. सही है, इकोनॉमिकल सी चीज़ है, अच्छी भी टी शर्ट मिल रही है और सस्ती भी है, ये सही है। तो उस तरह का ब्रांड है। Okay. अब जब वो डेवलप हुआ है, अब लाइक मेरी जब ग्रोथ हुई एज अ डिज़ाइनर, एज अ क्रिएटर, तो फिर उसके साथ अब ऑब्वियसली फिर फैब्रिक्स में इतना फ़र्क आया, आप पहन रहे हो, आपको पता है, ग्राफिक्स में आया है, फिर शूट्स, कैंपेन, सब कुछ इतनी इंप्रूव किया है, पूरी एक लैंग्वेज बदली है। तो फिर जो प्राइस में भी जो चेंज आया है, तो उसमें काफ़ी अभी वो पीरियड है जिसमें बैकलैश आ रहा है मुझे। Okay. Yeah. So हाँ, let's go back to अभी तक ना we are at that now you're sourcing materials. Yeah. Right. So you said कि यहाँ पे quality is primary and then फिर जो भी समझ आया वो कर लिया हमने, ठीक है? Now you and season के हिसाब से sweatshirts, hoodies, whatever. Yeah. So you've picked all that out. अब चीज़ जो है final एक उसका जो है shape ले रही है. Yeah. Now do you decide at this point, do you decide marketing campaigns या price पहले? प्राइस पहले आई थिंक ना? नहीं, ओके, मार्केटिंग कैंपेन्स पहले मार्केटिंग कैंपेन। यस। ओके, अजी मैं पहले फुल इन्वेस्ट कर देता हूँ उधर। हाँ. कि ठीक है, एक ले लिए, बजट बना लिए थोड़ा बहुत, ठीक है, समझ आ गई है, क्योंकि मैं चाहता हूँ एग्जीक्यूशन 100% हो। ओके, ठीक है। अब मैंने इतनी मेहनत की है कि डिज़ाइन प्रोसेस पे, कपड़ों पे बन भी गए हैं, क्योंकि एक तो सप्लाई चेन हमारी इतनी फक्ड है ना यहाँ पे, मतलब आई डोंट नो अबाउट कराची, लाहौर में सप्लाई चेन हर जगह ब्रो, हर जगह, लाइक हर जगह ही होगी फिर आगे। लेकिन खैर टेक्सटाइल वाले उसमें यूनिट्स वगैरह में इतना खवार करवाते हैं। मैं उनसे बात कर रहा था कि अब आप एक स्मॉल ब्रांड है आपका, हाँ. तो आपने जाना किसी यूनिट पे, हाँ. ठीक है, आपने कहना यार मुझे इसके कुछ पीसेस बना दो, वो हाँ. कह रहा है भाई निकलो यहाँ से, मैं तो बड़े ऑर्डर लेता हूँ, मैं तो लेजर क्लब का एक डिज़ाइन के 5,000 पीसेस बना रहा हूँ। हाँ, आप मुझे कह रहे हो मुझे 100 पीसेस बना दो, वो भी 5 डिफरेंट डिज़ाइन के, हाँ, लाइक 20 4 पीसेस बना दो एक। उनको इट डजंट मेक, इट्स नॉट फीजिबल फॉर देम। एग्जैक्टली, काइंड ऑफ, एक ये भी है। तो लाइक पहले तो यहाँ पे यही बड़ी स्ट्रगल होती है कि यार ठीक है, सब कुछ है, विजुअलाइज भी कर लिए, सोच लिए, पहले तो उसको बनाएं कैसे, बनवाएं कैसे। अगर आपका अपना कोई स्टिचिंग यूनिट वगैरह नहीं है ऑब्वियसली, और आपके कोई कॉन्टैक्ट्स भी नहीं है ऐसे। स्टिचिंग यूनिट कितने का पड़ता है? स्टिचिंग यूनिट लाइक आई डोंट नो, लाइक महंगा ही होता है सारा, लाइक इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है प्रॉपर। आपको स्टिचिंग यूनिट होता है, उसके अंदर प्रिंटिंग वगैरह, CMT, सब कुछ चीज़ें होती हैं। तो लाइक उसके लिए प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं, लाइक फैक्ट्रीज होती हैं उनकी प्रॉपर। तो अनटिल अनलेस आपके कोई खास वो नहीं है, कॉन्टैक्ट्स नहीं है, स्ट्रगल नहीं की हुई आपने थोड़ी बहुत, यू कांट रियली गेट इनटू इट। सही। ओके, सो नाउ यू आर एट, सो यू प्राइस इट जब पूरी चीज़ बन के सामने आ जाती है, बन गई, अचीव कर लिया वो मैंने रिजल्ट कि यार ठीक है, बिल्कुल वैसे एग्जीक्यूट हुआ जो मैं चाहता था। मार्केटिंग भी हो गई, वीडियोस भी बन गए, वीडियोस भी बन गए सब। अब वीडियोस का भी बड़ा एक मज़ेदार हमारा होता है, सारे हम कास्टिंग वगैरह करते हैं मॉडल्स वगैरह की, जो भी है उसका भी सीन कुछ ऐसे होता है कि ठीक है, गारमेंट्स बन गए, ये मूड बोर्ड है यार, सही है, ये हमारी कपड़ों की वाइब है पूरी, ठीक है। तो इस मरतबा बहुत वाइब्रेंट सी वाइब थी कपड़ों की, डिफरेंट कलर्स की हैं, और सबका अपना अपना मैसेज है, नैरेटिव है पीछे। अब हमने कास्टिंग करनी है यार, इसके लिए हम किसको कास्ट करें, ठीक है, यू कांट पिक कोई भी, भाई तुम आ जाओ इस तरह कर लो, इस तरह नहीं हो सकता। या अब कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आपकी कोई कलेक्शन में आपने कोई लाइक बहुत ही कोई अट्रैक्टिव म्यूज़ पकड़ना है, जो बड़ा कोई फेयर म्यूज़ होना चाहिए, आपका मॉडल होना चाहिए। अब आप कास्टिंग, इसलिए मैं उस पर वो कर रहा हूँ एम्फेसाइज कि वो पे कपड़ों की वाइब से होती है। ओके, डिसाइड बन गया, उसका मूड बोर्ड है, ठीक है। अब हम जी स्काउट कर रहे हैं कि ठीक है यार किसको लें, क्योंकि अब जारी बात है, अब सर्कल्स वगैरह ओवरलैप करते हैं, तो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, हाँ माशाल्लाह, ठीक है, इसमें काम कर रहे हैं, किसी ने किसी के लिए शूट किया हुआ, स्टफ लाइक दैट। तो फिर हम वी स्टार्ट रीचिंग आउट कि ठीक है ये पैकेज है, इस तरह करना है, ये शूट है, फिर जो एग्री करते हैं, फिर हम एक हमारी टीम आती है। तो लाइक मेरी एक वीडियोग्राफर है मेरा अब्दुल्ला रियाज, साथ देयर इज दिस फोटोग्राफर सुभान। तो फिर हम लोग एक शूट लोकेशन वगैरह पे करता हूँ मैं, एक जाकर शूट लोकेशन हम एक देखते हैं कि यार ठीक है कहाँ जाना है, कपड़ों के साथ जाए फुल ऑन, ठीक है, वाइब वही होनी चाहिए, कुछ मिस ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि इतनी अगर मेहनत की है उस पर, कपड़ों पे, सब पे, कास्टिंग पे भी, लोकेशन थोड़ी सी भी ऑफ होगी, इम्पैक्ट पड़ना ही नहीं है कैंपेन में। वो सही, अजान पे इम्पैक्ट पड़ना ही नहीं, याद रखना होता है कि स्ट्रेस आउट में सिर्फ इसलिए होता हूँ क्योंकि यू नो मैं जिस कैटेगरी में प्ले अराउंड कर रहा हूँ वहाँ पे कुछ बड़े नाम हैं, ठीक है, और लाइक दे आर डूइंग स्टफ 100%, हाँ फिनोमिनल, हाँ, फुल टाइम कर रहे हैं, फुली फोकस्ड होके, अनलाइक मी, ठीक है, जो कि साइड पे कर रहा है काम, बट आई एम स्टिल इन द सेम स्पेस, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो उसमें मैं बहुत इस तरह अफेक्ट होता हूँ कि मुझे बहुत एंजाइटी होती है कि जब मेरे कोई चीज़ मेरा कोई काम टाइम पर नहीं हो रहा, ओके, ठीक है, मेरा कोई काम टाइम पर नहीं हो रहा है, मुझे या सेम रिस्पांस नहीं मिल रहा, सेम तो चलो नहीं, लाइक मुझे रिस्पांस थोड़ा कम मिल रहा है, तो लाइक मैं बहुत लाइक उस पर चला जाता हूँ। लेकिन फिर मैं ये भूल जाता हूँ कि शायद मैं अभी भी लाइक वो जो लोग कर रहे हैं सब, मतलब
ग्रोन हैं सारे, लाइक अच्छे खासे बड़े एडल्ट्स हैं, आदमी है आदमी है, लाइक 30 साल के, 28 साल के, फुली इन्वेस्टेड है उसके अंदर, माशाल्लाह बैठे से, हैं पूरा पूरा दिन काम करते या हैं। और मैं लाइक क्या करूँ यार, सुबह 8 बजे जाके 5 बजे मैं घर आता हूँ यूनिवर्सिटी से, और फिर थोड़ा बहुत टाइम को देता हूँ, एंड आई एम स्टिल इन द स्पेस, या इन द कॉन्वर्सेशन। ठीक है। तो लाइक ये भी एक चीज़ रही है कि लाइक साथ साथ थोड़ा लाइक कॉप अप करना, अब मैंने सीखा है कि यार नहीं, हर बंदे की अपनी एक पेस है। You absolutely cannot let it affect your cognitive capital. You cannot let it affect your mental scape. आप बड़े होते छोटे होते, अगर आप 28 साल के भी होते ना, you still, जो आपने दूसरी बात बोली ना ज़्यादा ज़रूरी, वो है कि you still in your own, you're going to go at your own pace. Exactly. Some people can just work like that. I mentioned Zain Pirzada. Another brilliant example is Ramesh Safa. You know who Ramesh is? Ramesh Safa. Yeah, Ramesh. बहुत काम करता है। हाँ, Ramesh I'm pretty sure he can work 19 hours a day. He doesn't care. Some people are just built like that. अब उनको देख के, लेकिन अगर कोई और बंदा ये बोलेगा कि यार I can't work 19 hours. Bro, most people can't work 19 hours. हाँ, जैसे मैं सही है, ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। And so what? So I don't like, I mean, what you absolutely cannot allow any of this stuff to do is affect your mental health in that way. Because, bro, you know what I mean? Like, it's a creative pursuit. This isn't just a business. Yeah. You know what I mean? I don't know, man. The other thing that I did want to talk to you about was, so marketing, you're obviously creating great content. Or at least, देखो, who am I to judge? I like it, right? अब मैं बोलूँगा क्योंकि मैंने बोल दिया अच्छा है तो अच्छा है, right? ऐसा नहीं हो सकता. लेकिन how do you approach the PR angle? Because there is that angle, you cannot exist without it. As a brand, unfortunately, you know, one wishes के merit पे होता सब कुछ. ठीक है, हाँ, बस अब ऐसे नहीं है. This is Pakistan, bro. You know, this is not. I still try to reach them on merit. ठीक है, like कुछ मुझे उनका आया भी था, लाइक मैं नेम नहीं करूँगा, कुछ मीडिया न्यूज़ एजेंसीज हैं लाइक सोशल मीडिया पे, ठीक है, उन्होंने काम देखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड देयर लाइक ठीक है हम आपको करना चाहेंगे, यू नो, फीचर करेंगे और स्टफ लाइक दैट. मैंने कहा हाँ करो, कहते लेकिन ये हमारे 2 पैकेजेस हैं, आप ये देख लें, इसमें से चूज़ करके बताएं. No, लेकिन ये 2 पैकेजेस, ब्रो क्या कर रहे हो यार. मैंने वॉइस मैसेज भेजा, मैंने कहा यार मैं लाइक प्रीवियसली भी फीचर हूँ, लाइक मेरिट पे ही होता है ये काम. अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, बजाय आप रीच आउट करो मुझे, जो भी लाइक जस्ट फीचर कर दो आप मुझे, क्योंकि आपको मेरा काम अच्छा लगे यार. यानी पीपल on both sides of that interaction, people want to take immense liberty, because दूसरे side पे ऐसा भी होता है. I know people who are big, huge on social media. They have a lot of followers, they have a lot of, you know, they have a lot of content, and it's good content. उनसे भी ऐसे बोला जाता है कि आप जो है ना, आपको ये PR पैकेज भेज रहे हैं, इसको shout out दीजिएगा. पर उनका shout out बिकता है. Do you know what I mean? Like they charge money for their stories, you know, and I just don't know, and it's interesting. It's just interesting to see. तो सही है ना, अगर इस इंटेंशन से कोई भेजना चाह रहे हैं, हाँ, और अगर आपके पास वो है एबिलिटी कि आप उसको फायदा दे सकते हो, तो ठीक है, आप उसे पैसे मांगो, वो दे सकता है तो दे, ठीक है. हाँ, but that's it, ना, like there's a price and then you just pay it. You can ask for a discount, but to ask for freebies all the time, वो अपने जो हम फिर लाइव हैं वहाँ यहाँ पे काटना, ये प्लीज इंक्लूड करना. So I think let's bring this podcast to a close. We were talking about PR. Yeah. What's your general approach with PR? I don't know. You don't know? I don't know. क्यों दिमाग ऐसा हो रहा है अचानक से ब्रो आपका? पता नहीं ब्रो. चलो, पता है आपको क्यों हो रहा है? मैं बहुत बहुत एक ओवरवेल्म फील. क्यों ओवरवेल्म फील कर रहे हो? बताओ मुझे. पता नहीं ब्रो, बस कर रहा हूँ. It's यार पता है क्या? I think it's my expression. मेरी जो है ना, मैं फिर ये बात की हुई है कि मुझे जो है ना विलेन कास्ट कर देना चाहिए लोगों को. देखो, this is the effect I have on people. सही है. ब्रो ओवरवेल्म हो गए ना आप? तो like PR related, like tell me, like what's your approach? Dude, I don't have an approach. I just try to talk to people, man. Same. And sometimes people seem shady, and when they seem shady, I try to not talk to them then. Same. फिर मैं जो है, that's it. That's my, more or less, that's my approach. And I think the way you went about it with me, at least, was wonderful. Yeah. I would like to mention here कि, you know, you were like, I'd like to come on to the podcast. I'm like, cool. You know, what's the deal? And you were like, I thrive, and Thrive is the clothing brand, this and that. And to that, I think I was initially quite cold to you. And I was like, and you handled that so well. And just that gave me a lot of confidence in you कि यार ये अच्छा बंदा है, इससे बात करनी चाहिए. Because I was like, हाँ, देखते हैं bro. You know, send me something. Yeah. And you were like, cool. You know, I think more than anything else, the willingness to put yourself out there.
that will serve you better than anything else. Huh. Because the thing is, so all the PR in the world, all the, I don't know, all the PR packages you can send someone, all the, all the articles you can get printed, क्योंकि आजकल ये भी होता है, all the articles you can get printed, उस सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है, उस सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये होती है कि you're willing to let yourself be compared to the best people in this industry. I think there's nothing greater, right? Yeah. So that was a microcosm of this, because कि मैंने रास्ता का काम actually देखा हुआ है, मैंने फतवा का काम Like actually देखा हुआ है, like I've worn it, I've seen that stuff. Like the design language. And you're like, cool, yeah, I'll send you some of my stuff. That to me showed, if nothing else, confidence. Because like I've been like trying my best. Of course. ये चीज़. नहीं, of Okay, course. Kazi, like honestly, like the business side of the thing. The first thing always. अभी जो है ना वो Allah इतनी करेगा bro. चल रही like say obviously क्योंकि like 5 नहीं, years जो है ना like starting के जब मेरे दिमाग में था ये ज़रा लेने लगे हैं. ऐसे ही होता है मतलब अगर तो आप गिव इन ना कर जाएं लाइक किसी का काम ना उठाना शुरू कर दें जो भी हैं तो अपना एक एस्थेटिक बनाने में यू नी लाइक 3 to 4 years लाइक 5 साल का है कि भी रगड़ा है उसमें. अगर तो ऑथेंटिक काम करना है खुद से करना है कोई आइडेंटिटी बनानी है तो अब लाइक पिछले 1 साल से यही फोकस रहा है कि अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए लाइक ब्रांड आइडेंटिटी हो डिज़ाइन लैंग्वेज अपनी हो यार. अब वो हो रही है मेरे ख्याल से पहले नहीं थी ये 1 साल पहले ना. ब्रो वो तो है देखो alhamdulillah. So my initially I was just excited that all of it was quality, right? I was just so excited कि because Rasta and then Fatwa थोड़े पुराने हो गए, right? And they're doing quality. And मुझे हमेशा ये concern होता है कि नए लोग क्यों नहीं आ रहे. And so I saw your stuff, I think, oh, also quality, fantastic. I just wish कि but then absolutely different. No, I don't think there's a. I think you people occupy the same genre. That's a genre. What are you बजाय gonna ये देखे कि मेरा एस्थेटिक थोड़ा इसके साथ मैच हो रहा है यार नहीं ये ऊपर ना आ जाए ये चीज़ हम नहीं प्रोग्रेस कर पाएंगे इस तरह पे क्योंकि डिफरेंट तो फिर भी है यार. हाँ हाँ No. Huh. Bro, anyone who's made it really big, na. I have always this has been my experience with them. They've uplifted other people. People who've made it really big. Now, when I say really big, the Youngsters, an excellent example, right? Yeah. I don't know if they've not. I don't know if they've not uplifted anyone that they've deemed good. And ये ज़ाहिर लाजमी मेरिट का अपनी जगह मतलब the primacy of merit cannot be overstated. People need to be good. But then once they're good, younger singers in their circles, they've uplifted all of them, right? They didn't need to. They didn't have to do that, but they did, right? And that's I think other people should look to them for inspiration कि यार अगर ये लोग कर सकते हैं वो दूसरे भी rappers ही हैं technically, right? And they're uplifting all of these people. Then we could maybe do that in other avenues or fashion, street fashion or streetwear or fashion design or whatever. You could do that in other things as well. Photographers, videographers, whatever. I don't care. Sir, all of it, right? It applies to everything. So yeah, man, I think that'd be good. But anyways, dude, I think it was lovely that you came down all the way from Lahore. Thrive Streetwear official. The pleasure was mine. Instagram like अपना website जो है भी like please अपना Instagram वगैरह सब कुछ बता वहाँ दो. पे मिल जाएगा. Globally भी हम करते हैं अब ship. So that is something we couldn't really like talk about right now, but we deliver globally. You deliver as well. all over Pakistan? Like main goal Deliver जब next all over goal है वो है अब global जाना है. Oh. Yeah. Space obviously. Okay, fantastic. Bro, obviously, Thrive like I Streetwear. said, you occupy that. तो वहीं जाना है ना? वहीं inshallah वहीं जाना है. Fantastic. YouTube So Thrive Streetwear official on Instagram and the website, and that's it. YouTube नहीं है? ज़रूरत भी नहीं है. सही है. Fair enough. And I've spoken at length about maybe collaborating with some of the mainstays of our clothing industry, like maybe Junaid Jamshed, like maybe Khadi, Facebook like है maybe, but still like Thrive Streetwear on but again, Facebook as like well, the way वो we कोई mentioned, operate that would be नहीं करता, better. like Instagram. Any other shout? Twitter? Nothing. नहीं कोई operate नहीं करता. Cool. And if you message that Instagram account, you will message him directly. And this has been Yahya Haroon. I've been Kazi Akbar. Message him, get in touch. Thrive Streetwear, man.
Assalamu alaikum.